10 महीने बचे हैं यूपीएससी 2026 के लिए, पर अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास एक क्लियर रोड मैप नहीं है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ऑप्शनल कब करना है, रिवीजन कैसे मैनेज करे। और इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स, इवन सीरियस कैंडिडेट्स, लास्ट मोमेंट पे बर्नआउट या फिर डायरेक्शनलेस फील करते हैं। प्रीलिम्स हो जाता है बट देन रियलाइज होता है कि मेंस की तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई और ऑप्शनल तो कहीं रह ही गया। एंड देन हाफ प्रिपेयर्ड या विदाउट प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट देते हैं एंड यू गेट द सेम डिस्करेजिंग रिजल्ट्स। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक टेस्टेड टाइम बाउंड 10 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, जुलाई इटसेल्फ, that has helped me clear mains in my first attempt and has also helped dozens of toppers every year to clear UPSC. Hi, I am Anmol Sharma and I secured All India Rank 32 UPSC CDS, and I have also appeared for UPSC Civil Services interviews. And I have been associated with UPSC for more than 9 years. I have seen what works, what doesn't work, how the trend is changing, and I have personally guided many candidates to clear different exams of UPSC all these years. And अगर आपका गोल UPSC 2026 है तो ये 10 मंथ स्ट्रैटेजी आपको एक डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और एक क्लियर रोड मैप देगी टू क्लियर द एग्जाम। अब स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द नेचर ऑफ यूपीएससी एग्जाम इज चेंजिंग, इट्स एवर इवॉल्विंग। अब सिर्फ रट्टाफिकेशन या नोट मेकिंग से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। जो कैंडिडेट सिर्फ कोचिंग के नोट्स पे डिपेंड कर रहे हैं उनका तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो एनालिटिकल आंसर राइटिंग में फंस रहे हैं। सो क्या चेंज हो रहा है यूपीएससी में? व्हेन यू लुक एट द प्रीलिम्स हैज बिकम सो मच अनप्रिडिक्टेबल। 2024 के पेपर में देखा होगा, 2025 के पेपर में देखा होगा हाउ ऑब्सक्योर करंट अफेयर्स, ऑब्सक्योर रिपोर्ट्स, आउटडेटेड करंट अफेयर्स आर बीइंग आस्क्ड। मेंस के क्वेश्चन और भी एनालिटिकल हुए जा रहे हैं, एसेज, एथिक्स, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस वापस से बढ़ गया है, एंड इनफैक्ट व्हेन यू लुक एट द स्कोर of the top 100 candidates of 2004, you will see ऑप्शनल के मार्क्स ही डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी स्टैटिक नहीं हो सकती, इट हैज टू चेंज। व्हाट वर्क 2 to 3 years ago is not working anymore. Conceptual clarity और आंसर राइटिंग is more important than just note making. और रैंडम रिसोर्सेज के चक्कर में नहीं पढ़ना, we have to keep the resources small but revise multiple times. और यही अप्रोच हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद आवर 10 मंथ स्ट्रैटेजी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मंथ वाइज ब्रेकडाउन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 2 months, द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। इस मंथ्स में हमें फोकस करना है एनसीईआरटीज पे। एनसीईआरटीज फिनिश करनी है, इफ यू हैवंट ऑलरेडी फिनिश्ड। 6 to 12 की सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी, स्पेसिफिक एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है। द लिस्ट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज दैट यू नीड टू फोकस ऑन। साथ ही साथ हमें ऑप्शनल स्टार्ट करना है। यस, ऑप्शनल, डोंट डिले। 1 से 1.5 घंटा एवरी डे यू नीड टू फोकस ऑन ऑप्शनल and try to cover one topic a day. And if you are still confused about your optional, you can reach out to me, I'll help you out with your optional. And साथ ही साथ current affairs का भी ध्यान रखना है, you need to align the current affairs with the syllabus. After finishing the NCERTs, you can move to one resource book per subject, not more than that. If you can master that one resource book, जैसे कि पॉलिटी में वही स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत, then you are almost there. Now coming to September and October, the next 2 months, here our focus should be to deepen our optional preparation. Optional का ज़्यादा से ज़्यादा cover इन 2 महीनों में किया जा सकता है और करना भी चाहिए, and focus on the core or the static part of general studies subjects. So your daily schedule should look like 2 GS subjects per day, covering as much optional as you can, and this is also the time where you start writing answers. You can start with 2 GS answers weekly. Don't worry about the time limit, don't worry about the presentation, just start writing. If you need help with your answers, evaluation, any feedback, you can always reach out to me. इन 2 महीनों में आपका 60 to 70% optional should be done, and make sure you keep revising whatever you're studying. You keep revising whatever you studied in July and August and whatever you study in these 2 months. अब आते हैं नवंबर और दिसंबर में। Here you try finishing your GS subjects and optional के short notes बनाना शुरू कर दो,
बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना टाइम नहीं होता दैट यू फ्लिप थ्रू द लॉन्ग elaborate notes. You need to have your short notes ready. You can start with MCQs of those particular topics or the GS subjects. For the topic wise MCQs, you can reach out to me or you can join my Telegram channel where I keep updating all these resources and all these mock tests. And now is the time you write at least 3 to 4 answers of GS and 3 to 4 answers of optional every week, be it throughout the week or be it on the weekends. And also you can start writing one essay per month or 2 essays per month and get some feedback from your peers, from some senior, or from me. And now coming to January and February, and this is the time you shift your focus on prelims from mains. Cover as much as MCQs as you can. Start revising the current affairs that you covered. Revising the current affairs is more important than covering them. And also start doing CSAT at this time. CSAT should not be taken lightly. Don't make the mistake of taking CSAT lightly. CSAT की वजह से every year, every year CSAT tough होता जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे रैंक होल्डर्स भी प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पा रहे नेक्स्ट टाइम. सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग CSAT lightly. And prelims के साथ साथ just keep 1 hour for optional. Keep covering more topics, and if your optional is covered, start making or work on the short notes that we talked about. Now coming to the last phase of March and April. This is the time where you go full-fledged on the GS mock tests. You need to give 8 to 10 full GS mock tests. And सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेंड good amount of time to analyze what mistakes you are making, to update your current notes with the new information that you're getting through the test. आंसर के सॉल्यूशंस को पढ़ो, देखो, your concepts will get clearer and you update your notes from the test solutions. And along with that 5 to 6 full CSAT tests देना important है in the time bound manner. उसी 2 घंटे में try to solve, start with the previous year CSAT questions, previous year CSAT papers, and see if you can solve the questions in the given time. And इस time पे you need to also cover some important documents like economic survey, budget, certain important reports, and the new schemes that are being introduced. And इस time optional side रख दो, prelims के बाद उठाना, क्योंकि अभी तक 60, 70, 80% आपका optional cover हो जाना चाहिए. Rest of it can be handled after the prelims. Don't worry about that. And when you give the prelim mock tests, just focus on elimination, pattern recognition, and your accuracy. And coming to the last 20 days, the most crucial time. This is the time for final revision. You need to revise at least twice all the notes that you've made. Current affairs should be on points. CSAT पे focus करो. Just go through the formulas, go through the tricks, and I suggest you stop giving the GS or prelims mock tests now, because any sort of dip in marks in any of the mock tests can really discourage you. That can really lower down your morale. So instead focus more on revision and stop giving mocks. That is what I suggest, because trust me, at this point stress management and mental health plays the biggest role. Nobody talks about that, and this is very often ignored by the candidates, and they face the repercussions during the exam with increased stress, anxiety. एक चीज जो मैंने सभी टॉपर्स में नोटिस की है कि दे नेवर स्टडी और प्रिपेयर अलोन. दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद सम पीयर ग्रुप, या फिर कॉन्स्टेंटली किसी सीनियर या किसी एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस लेते रहते हैं. एंड जब गाइडेंस क्लियर होती है, दैट लीड्स टू constant improvement and consistent effort. And as I told you, I have been associated with multiple exams of UPSC through the 9-10 years, and I have seen what mistakes I made or other candidates make, how to rectify those mistakes, what works and what doesn't work. And if you need any sort of guidance, be it about prelims, be it about optional, yeah, even about the mental stress, the anxiety that you feel, if you just want to talk about it, I understand. I have been associated in this line, and I'm here to hear you out. You can connect with me in the links in the description box, and I will help you out with the best of my ability. हर किसी को गाइडेंस नहीं चाहिए, बट जिसको चाहिए वो टाइम, एफर्ट और मल्टीपल अटेम्प्ट सेव करता है. लाइक करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया.
कमेंट करो एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, और या आपका ऑप्शनल क्या है, और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस, एंड सब्सक्राइब टू VicThree IAS फॉर द UPSC गाइडेंस विदाउट वेस्टिंग टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।